से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस गेम से। ये वो पहला स्पोर्ट है जो मैं ज़िंदगी में खेला हूँ। मैं 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक टेनिस खेलता था। जूनियर इंटरनेशनल लीग खेलता था, ITFs। तो बहुत ही मेरा मनपसंद स्पोर्ट है ये। मेरे पिताजी टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। वो एक टाइम पे नेशनल्स खेला करते थे। तो ये एक ऐसा खेल है जो हमारे घर में रोज़ इसकी चर्चा होती है। बहुत सालों तक खेला गया था। तो ये जो टेनिस प्रीमियर लीग हो रहा है और जो कुणाल भोजवानी इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम साथ में ये लीग खेला करते थे, हम ITFs खेला करते थे। तो मैं बहुत बहुत सपोर्टिव हूँ इस लीग का। इसका जो मुद्दा है वो ये है कि नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना गेम दिखा सकें। और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और इस लीग को सपोर्ट कीजिए। और एक एग्जीबिशन मैच खेलिए है और लिएंडर पेस के साथ, जो इस देश के सबसे बड़े टेनिस हीरो हैं और कमाल के मेरे हीरो रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो रह चुके हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ। जी जी, अगर हम करेंगे तो उम्मीदवार कम हैं पर बहुत अच्छे हैं। लिएंडर पेस हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, महेश भूपति हैं। ये ऐसे 3 प्लेयर हैं जिन्होंने करंट जनरेशन में या पिछले 15 से 20 सालों में बहुत कमाल किया हमारे देश के लिए। तो मैं चाहूँगा, मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मुझे कहानी मिले जो टेनिस के बैकड्रॉप को शूट करे। इनमें से किसी की अगर बायोपिक, मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है इसमें। आजकल के ज़माने में क्या होता है, ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, इनकी मैचेस आपने लाइव देखी, इनकी पर्सनल लाइव्स। तो ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि मैं बना सका या लिख सका या डायरेक्ट कर सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा। पर मैं चाहूँगा टेनिस पे कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ बने और हमें देखने का मौका मिले। जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मीटू कैंपेन है, हम सबका सपोर्ट है इसे। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें जो विक्टिमाइज हुए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है अपनी कहानियाँ कहने का। बहुत हिम्मत लगता है। कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि अगर कोई बाहर आके कुछ बोले तो शायद उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी या उन्हें ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू हो या जो ज़माना बदल गया उस कारण एटलीस्ट हम उन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन पा रहे हैं। और हो सके तो जितने भी लोग गिल्टी पाए जाते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आगे आ रहे हैं वो जेन्युइन केसेस हों, वो जाके अपना जो एक केस है उसे आगे रख पाए, ताकि सिर्फ किसी पे एक फॉल्स एक्यूजेशन ना लगे, वो प्रूव हो, वो जैसे कहते हैं वो गिल्टी साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है हम सब जितने भी लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे गिल्टी लोग हों उन्हें कुछ ना कुछ जिस कदर हो पनिशमेंट मिले, या फिर ऐसी पनिशमेंट मिले जिससे कि आगे वो भी सुधर सके और कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। और जितने भी विक्टिम हैं उन्हें अगर हम कुछ और मौके दे सके लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑब्लिवियन में चले गए, तो अगर हम उन्हें मौके दे सके आई थिंक हम सबका सपोर्ट है। थैंक यू। यस, कुछ ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन मत पूछ लेना। यस, वेल सच बोलूँ झूठ बोलूँ कभी लाइफ में टेनिस नहीं खेला, बट इवेंचुअली मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी। सो आई थिंक अच्छा है कि ये इनिशिएटिव हो रहा है और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट। या देखा मैंने।
वेल आई थिंक वो एक और रीज़न है कि मेरे सारे फ्रेंड्स मैंने देखा कैप्टन है, रश्मि, शिमोना, ऐश्वर्या, सो इट्स वेरी गुड बिकॉज वो लोग सब अपनी तरफ से इस स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, सो इट्स रियली गुड. यस बिल्कुल, क्योंकि मैं वही बोल रही थी कि इंडिया में सिर्फ दो रिलीजन है, एक क्रिकेट है और एक फिल्म. तो लेकिन ओवर द इयर्स नाउ थैंक्स टू सो मेनी फिल्म्स एंड आई थिंक व्हाटएवर जॉन इब्राहिम अभिषेक बच्चन एंड ऑल आर डूइंग, तो इसकी वजह से फुटबॉल, हॉकी, इन सब को भी हाईलाइट मिल रहा है एंड नाउ दिस, सो इट्स वेरी गुड कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो करो ओके अभी आज आप भी रेडी हैं, करो रोलिंग. टेनिस प्रीमियर लीग की मेरा पूरा सपोर्ट है जी, 100% सपोर्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. अभी मेरा नाइट शूटिंग भी है, यहाँ से वहीं भागने वाला हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग पे. तो टेनिस के लिए ये जो कुणाल ने और मुनाल ने ये जो इनिशिएटिव ले लिया, ये बहुत अच्छा किया है. मेरा बहुत 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 उनको मुबारकबाद भी है और सपोर्ट भी है. और मैं बचपन से बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस भी खेला. और इसके सारे निशान जो है मेरे नीज पे अवेलेबल हैं. बहुत गिरता था मैं, लेकिन गिर के उठता था और उठ के ही आगे यहाँ तक पहुँचा. आप सबको भी दोस्तों ये बहुत बधाई है कि ऐसा आपको मौका मिल रहा है. तो आगे बढ़ो, विंबलडन जीत के लाना भाई, बहुत जल्दी लाना है. और इंडिया में ये हम सारी चीज़ें करेंगे. और मेरी तरफ से माल को बहुत 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 ज़्यादा देखा जा रहा है इंडस्ट्री में जो ऐसे खेल है, जो गेम्स है, जो बढ़ावा दिया जा रहा है इंडस्ट्री के माध्यम से, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में पता चलना चाहिए कि इंडिया के लोग जो हैं वो एक ही चीज़ में माहिर नहीं है, वो हर फील्ड में माहिर है. क्योंकि देखिए शुरुआत जो हुई थी वो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा जो साइंस आज बात करती है वो हमारे ऋषि मुनियों ने किया. तो भारत में हर चीज़ है. तो ये जो सपोर्ट है भारत धीरे धीरे हर स्पोर्ट्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे आया है. और मेरा सपोर्ट, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट सबके साथ. और मोस्ट वेलकम जी.
I think most of it they both have already mentioned. I would like to, agree with that. Tennis को इस तरीके का बढ़ावा नहीं मिल पाया था अभी, and this is a great platform for everyone, right from the age of 14 to above 40, and it's going to be a great opportunity for all of them. No, मैं actually मैं honestly मैं 2 क्लास के लिए गई थी, but my shoulder injury acted up again, so I couldn't play it unfortunately. But I wish I didn't have the injury, I would have continued probably. Strategy as such नहीं है. Everyone's here an athlete. Everyone's here a player. Everyone's doing their best. And I personally would love that मेरी team जीते. I think everyone wants that. But I mean, me the best player, me the best team. Yeah, and I think we have best players. जब auctions भी हो रहे थे and जितने जैसे आज हम यहाँ पर हैं, I think by God grace we have everything. There are players that they can't move from their chair also. So they are the players and I think they are far better than us when we started learning tennis. So yeah, देखते हैं. Like Pooja said, हाँ सबको चाहिए कि अपनी टीम जीते, but everyone is good. So be the best one. Thank you. Aishwarya. चाहती हूँ, आप लोगों के पास वक्त है. TPL is something that we have all come up with. मृणाल ने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब बताया, I got really really excited क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं. I've been a swimmer, I've been a table tennis player, लेकिन लॉन्ग टेनिस खेलने का कोई मौका नहीं मिला. एंड बचपन में मुझे किसी ने कहा था कि आप नहीं खेल पाओगे because I tried learning it and वो हुआ नहीं. So when he said कि ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, I said I will be a part of this only if I get to learn it. So he said done. And टेनिस से एक अलग मोहब्बत हो गई है, एक अलग प्यार हो गया है. And I'm very very excited क्योंकि I have seen the kind of talent that this country has. हम लोगों ने जब अपना टैलेंट हंट डे किया था, बहुत सारे लोग आए थे, बच्चे आए थे, बड़े आए थे, बुजुर्ग आए थे. And the kind of talent that this country has, it makes me very proud. तो इस टैलेंट को शोकेस करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनना बहुत ज़रूरी था. And to be a face of one of the teams, it just makes me very very honored, very very happy. I think more than that कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे जिनको बढ़ावा नहीं मिला है. I think हमें अब ये देखना चाहिए कि कितने सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी कंट्री में. लोग हमेशा क्रिकेट को बोलते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें हैं. क्रिकेट ने अपना एक दर्जा बनाया है बिकॉज इट डिजर्व्स इट. एंड बाकी सारे स्पोर्ट्स हैव फॉलोड सूट. आप कबड्डी देख लो, पीपल आर नाउ वॉचिंग कबड्डी. आप हॉकी देख लो, पीपल डिसाइड टू नाउ वॉच हॉकी. टेनिस लोग देखते हैं बट टेनिस खेलते नहीं हैं. खेलते भी हैं तो इट्स अ स्पोर्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वो ऐसे हाई क्लास का स्पोर्ट समझा जाता है. इट्स नॉट अवेलेबल टू द मासेस. तो हम लोग यही चाहते थे कि जो जितने भी लोग हैं जो इस स्पोर्ट को लेके पैशनेट हैं वो सामने आए एंड वी विल गिव देम द राइट प्लेटफॉर्म. जी मेरी टीम है. मैंने खेलना शुरू किया है. मैं पिछले 2 महीने से खेल रही हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी
delivering your best. So that's the idea. But TPL एक पूरी family है. हाँ 6 teams में हमने बांटा है to get that spirit high. But TPL is one big family. जी Me Too कैंपेन के बारे में मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी जा रही हैं. And I'm so glad कि ऐसा कुछ हो रहा है. I think एक clean up required था, लेकिन I also feel कि personal vendetta भी निकाल रहे हैं लोग. Let's not do that. And you know it's not a fight about women. सिर्फ औरतें exploit नहीं होती, मर्द भी exploit होते हैं, औरतें भी exploit करती हैं. So this Me Too movement has nothing to do with one gender. It is about human dignity in workplace, and we should respect that. Thank you. So when they came up to you with the proposal of being a part of this, owning a franchisee, what was your thought? Have you played any sport or tennis in particular? Okay, he believes it's going to be a bigger sporting league than any other thing one. So Mano, what are your thoughts on the same? Do you get time to practice, or are you only going to be supporting? Be honest. Rashami was honest. I love her answer. She said, I'm supporting. It was a tough sport for me to take up. What about you? I agree with Rashmi 1000%. It's a tough sport, It's a very, very tough sport, and I think it's a bit too late to start. Hence, it will take a longer time to but you're 17, right? So it's not going to. Oh, I wish, Ranjan, I really, really wish. Get that long ago, not that long. बहुत पहले. But no, I think the whole idea is to support, because I love watching tennis as a game. And I think the fact that Nalin Kural actually thought of me got me on board, so I think I'm very, very honored and very lucky to support the game that I love watching. Super. Please take your seats. And there's lots more coming up. I'm going to invite the other members as well. The Stallion, ladies and gentlemen, Raju Bhavani, Shaile Alagia. If I could request to the team owners, and Tejasvi Prakash is the brand ambassador. Give it up for Raju and Shaile. Tejasvi is not here. I guess she's stuck. But she's going to be. You know how Bombay traffic is on weekend. She's shooting for a show. Come here. Don't steal the limelight from Abbas Mastan of tennis. Come here, please. Please. You can't be. Sir, आप खेलते हैं tennis? ना थोड़ा. So give it up for. अच्छा, T-shirt पे hit लिख के आते हो आप. Okay, I'm super happy. Congratulations first of all to be a part of this. Thank you for supporting us. सर मेरे को ना अंदर की खबर ये आई है कि आपकी फिल्मों में कास्टिंग तब होती है जब एक्टर को टेनिस खेलना आता हो. फिर तो मैंने कभी फिल्में नहीं बनाई. मेरे को ऐसे सुनने को आया है. So I think then the main lead of my next film is going to be Kunal Bijlani, because वो बहुत कमाल का टेनिस खेलते हैं. But of course you're going to be playing, right? Yes, I am. I am going to be playing. मैं बहुत सालों बाद खेल रहा हूँ. कुणाल और मैं बहुत साल पहले सर्किट साथ में खेला करते थे. We used to play the IPL together. तो जब इन्होंने मुझे TPL के बारे में बताया, and उन्होंने कहा कि इतना एक अमेजिंग इवेंट हो रहा है to kind of promote and support local talent, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा रिकनेक्शन स्पोर्ट्स में मेरा फिर से नहीं हो सकता था. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग. आई एम आल्सो प्लेइंग विद वन ऑफ माय हीरोज, मिस्टर लिएंडर पेस. I mean, I can't believe it's almost a dream come true. I was, when we were young kids, we were hoping कि कभी उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा. So I think बचपन में नहीं हुआ, but it doesn't matter, अब हो गया. Looking forward. So Kunal, if you could please present Hunter with a moment here. Can we request these to be please present the trophy here, and of course we got a special token of love from our side. मिलेगा गर्ल्स, मिलेगा तुमको भी मिलेगा. Don't अरे हमको तो मिला नहीं. I know how. Okay, ladies and gentlemen, so I would request you to say thank you very much. Ladies and gentlemen, I'd also like to take the opportunity.
bowlers, if I could request you to please step forward, present Mr. Leander with a special gift here. बैठना भाई। Guys, thank you, thank you. Sir, camera सामने, so smiles. Thank you, gentlemen. I'm also going to request, ladies, if I could request you to present Mr. Leander Pays with the trophy. Thank you, sir. It's going to be bigger than sir. It's going to be bigger than Grand Slam. We're honoring you one more time. So we got a special. वहाँ पे तो सर एक दो चीजें मिलती हैं, हमारे पास 6-7 हैं यहाँ पे सर, अभी लंबा चलेगा. Thank you, ladies, thank you. I would request you to take your respective seats and can we have a microphone? Okay, I have a microphone for you. And when Kunal first brought up this idea about a year ago, I thought it was a fantastic idea because it was very true to what kind of a man he is, which is trying to grow the game of tennis. I feel that tennis is a blue-collar sport. You either have to be a member of a club or you have to pay large fees to join a tennis academy. And I think that's one of the reasons why tennis in the 80s, when I first started playing, was not a mass game. It was more an elitist game. I felt that blue-collar sport, white-collar sport, you have to be rich to play tennis. I feel that over the last 20 years, tennis has grown a lot. And as much as I try to do my bit to show that tennis is a great profession, you can earn a great living out of it. You can also use tennis as a vehicle to go to colleges around the world. A lot of my contemporaries who could not become the Sachins or the Dhoni's or the Baichungs or the Federers or of the world, a lot of them use their tennis ability to go to American colleges, to go to Australian colleges and go on a tennis scholarship where 75% of their tuition fees or 100% of their tuition fees was covered because of their talent as tennis. To all the young girls out here tonight, I'd like to introduce you to a thing called Title IX. Title IX in the NCAA colleges is that for every equal scholarship that a young boy can get going to college, they have to have equal scholarships for young girls. And the amount of young Indian tennis players we have on the girls' side that have gone to colleges is up to about 85%. To me, I feel that tennis is a great sport, not just to earn a living, not just to put bread and butter on the table, but also to go to college and educate yourself, to make friendships, to play recreation tennis. To me, the league is so important because it's helping the game of tennis grow. Just as we've seen in India over the last few years, whether it is soccer, football, or whether it's IPL or ISL or Kabaddi League or Badminton League or tennis leagues, leagues are becoming very popular now, not just for being lucrative to earn great contracts, but to actually get our Indian players to rub shoulders with international stars. For me, I'm sitting next to a young man who I love and respect a lot because not only is he one of the finest script writers, filmmakers, one of the finest talents that we have in the film industry, he's also a great athlete. We play football together every Sunday. Tomorrow evening we're going to be playing again from 5 to 7.
He's a great athlete on the soccer field, and tonight I'm going to figure out how good he is on the tennis courts. But he actually played on the International Tennis Federation League when he was a youngster, and to see someone who is so talented at his craft, but yet at the same time looks at sport as a profession and a way of life is really heartwarming for me. So I'm really keen to see as to how good you wield this tennis racket on the court this evening. But the league is very important to grow tennis in our country. I've got to congratulate every one of your team owners for coming forward and doing your bit for sport in our country. I feel that a lot of people enjoy the limelight more than actually promoting the event that they're at. And to see all here encouraging sport, encouraging the youngsters to come out and play is really fun. That's the reason I'm out here, is for all of you. That being said, I wish the league the best of luck. I am here to support the league. I feel one with it. It's the sport I've loved for 29 years now. It's a sport that's given me a livelihood, a sport that's given me great friendships, it's given me an education. I grew up with two parents who were Olympians, and my dream was to be an Olympian. And when I was a young kid at the age of 12, I realized that I had to leave India to play tennis. I had to leave India to hone my skills. I wish this league, and I wish tennis and sport in India what it is now. I wish it was then in the 80s, because then I wouldn't have to leave India that much. I could be at home. So a big congratulations to everyone and everyone behind the scenes, because it takes all of us to come together as a community to do a great job. And I wish the league the best of luck, and I'm so happy to be a part of it. You spoke with Shashank being a great script writer. I'm going to give you an opportunity to write a script for today's match. What do you think is going to be the score against him? I can vouch for one thing, that Shashank's a better tennis player than I'm a script writer. I'll give you that for sure. Yeah. So Shashank, you wanna I think it's going to be a very tough game. It's going to be, I'm going to give it my all. The scorecard might reach 6-0 in favor of Leandra, but it won't be the reflection of what I put out there. I've got to tell you guys that I've been getting SOS calls from every club in the state that this young man has been practicing every single night. So much so that I've actually just flown in from Prague. I was playing an exhibition match with Novak Djokovic and Andre Agassi and Radek Stepanek the night before last. And I was actually nervous to get enough practice in, considering how much practice you had this week. I played multiple clubs because they were all showing me off after watching the video. So I played at celebration and they said, "आपको यहाँ पर allowed नहीं है, अब आप Zoom मिलेने पे जाके खेलिए." So I think that was the true reason. also, can I request you to increase the volume of the microphone? Since Ronald is going to be busy doing a lot of other things, can I request Sweetie Jain to join us onto the dais, please? And Sweetie Jain is the managing director of Ronald Jain. That's his wife, actually. Sweetie, if I could request you to please join us quickly onto the stage. Ronald, why are you nervous? First, I will ask you. Sweetie, if I could request you to please join us here. Ladies and gentlemen, give it up for Sweetie. And Sweetie, हमको ये पता लगा आप भी बहुत अच्छा टेनिस खेलती हैं. तो तुम्हारा please take a seat. So, have you also taken up the sport, or are you only going to be supporting? I'm just supporting. I have practiced twice, right? But it's difficult for me. You know, I really want to know, when you say you're going to be supporting, what do you mean by supporting? Is it going to be through Insta stories, or are you going to be like, no, I'm really, or are you going to be like really there? It's a tough sport. It's a great sport. It's a tough sport, but you know, once you get a hang of it, it's a lovely sport, and it's a phenomenal sport. So, okay, if I have to ask you, you know, for how long you think, you know, all of us need to practice to become really good at least, you know, an exhibition match, where we could at least, you know, have the courage to stand in front of you? You see, half of being a good tennis player is looking good. And if I look at this guys, you guys are already halfway there. You guys already look 10 on 10 in my book. So you just have to figure out how to hold a tennis racket and you're good. Yeah, we're halfway there. When you say halfway, like all of us combined are halfway there? जो रोल है सबका अर्जुन जी हमने देखा है कि
तो सबसे पहले सरकार को घर देना चाहिए उनको, बिकॉज मैं देखता हूँ कि उनके घर पे जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं तो छपरे होते हैं और बहुत ही कंट्री प्राउड। सो मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज अ कंट्री टू गिव देम गुड हाउस एटलीस्ट टू स्टे वेयर दे फील। और जब वो ऐसा करेंगे तब और प्लेयर्स ऐसे बनेंगे, उनको लगेगा कि हमें भी मिलेगा, एंड दैट्स व्हेन इंडिया विल हैव द मैक्सिमम मेडल्स एवर। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हैविंग सेड दैट, कमिंग टू द टेनिस लीग, आई थिंक IPL है ऑलरेडी हमारे, अभी ये टेनिस प्रीमियर लीग पहली बार इंडिया में लॉन्च होता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। कि और टेनिस प्लेयर्स, काफ़ी टेनिस प्लेयर्स इससे जुड़ेंगे और जो यंग प्लेयर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रोत्साहित होंगे कि लीग है तो उसका हिस्सा बनना है, तो उसकी ट्रेनिंग होता है। एंड आई जस्ट होप कि किसी दिन इंडिया के काफ़ी ग्रैंड स्लैम्स जीते। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। एंड अर्जुन, मैंने आपको टेलीविज़न की दुनिया में बहुत ही पॉपुलैरिटी मैंने आपको फिल्म में भी देखा है, यहाँ पे हमने देखा आपको टेनिस खेलते हुए, मतलब थोड़ी क्या वार्म अप कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी आप चाहेंगे जिसके ऊपर बायोपिक आप करें टेनिस की बायोपिक, और मैसेज आए कि हमने देखा Why not? I think अगर लिएंडर पेस, सानिया मिर्ज़ा या महेश भूपति किसी के ऊपर भी बने तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं कड़ी ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। एंड एज एन एक्टर इट्स अ डिफरेंट जॉब टू डू बायोपिक, बट मुझे लगता है बायोपिक्स की वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं जब किसी मूवीज आते हैं कि लोग अच्छे खिलाड़ी बने, या कितनी मेहनत, या किसी का दूसरे की मेहनत देखकर, उसकी लाइफ देखकर अगर हम इंस्पायर हो जाए तो वाई नॉट। I think it's a great initiative. Honestly, nobody can deny that Me2 is a great initiative. ये अच्छी बात है, अच्छे मूवमेंट है, बट आप सबको पता है कि उसका अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ भी हो रहा है। A lot of people are denying the allegations. मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया में कोई बिलीव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। द काइंड ऑफ एक डिविजन आता है, एक सेक्शन बिलीव कर रहा है, एक सेक्शन बिलीव नहीं कर रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ केओटिक सिचुएशन। मुझे लगता है कि अगर वाकई किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, एवरीबॉडी फील्स दैट, बट उसका एक प्रोसेस है जिसे हम लॉ कहते हैं, दैट शुड बी फॉलोड। बिकॉज क्या है, जब कोई अक्यूज होता है और उसका नाम आता है तो शायद उसने नहीं किया होगा, क्यों एज्यूम किया होगा तो मान लो नहीं किया होगा, तो मान लो वो चीज़ 4 साल बाद प्रूव होगी कि नहीं, 5 साल बाद प्रूव होगी कि नहीं, तो क्या वो सारे चैनल 10-15-20 दिन तक दिखाने वाले कि इसने नहीं किया, बिकॉज it's fair also, it's unfair also, it's a very confusing state for everybody today. I just believe that women who have genuinely had sexual harassment with them, they should go and file a complaint rather than keeping quiet. They should go and file a complaint ताकि उनको justice मिले।
have accomplished so much and you have made so humble to share these smiles. That's what needs to inspire us the most here. Every one of you, all seeking to accomplish what you're doing through this league, and all the kids out there watching, who study his game, who get inspired by him, and are dreaming big of going out there, learning, accomplishing, putting your craft and your skills. You know, it is a blessing that we have him amidst us, and you have him to guide you, to encourage you and inspire you. And seriously, Shashank, respect. I wouldn't want to be where you are. No. But you will enjoy it, and seriously, that takes guts. And you have to applaud him for coming out here, daring to play Leander for everyone of you out here. I know he's going to go easy on you. But a sportsman is a sportsman. Always talking about sportsman spirit. But what he was saying, the truth is that every one of you out here and beyond, through the media who's listening, playing a sport teaches you team spirit, teaches you sportsmanship, a sporting spirit, commitment, sincerity, your ability to compete with your own skill sets, your grit and determination to excel beyond your own capability, and lead, to honor, to hold on. You know what I love and appreciate so much in all the sports and all the sports people is after a game, I love listening to you all. There's just so much grace. I mean, there's grace in the sport, but in your ability to appreciate and acknowledge that and you concede to your opponent. That spirit to me is most inspiring and most encouraging. So truly embrace your sport, go out there, play. Technology has invaded our lives, is going to for the future. This is the way of our lives forever, through our lifetime and beyond. So without dissing that may have its pluses, that may not. Our generation is discovered it, the next is born to it, and so on and so forth. But there are all these other qualities that can get strengthened and accomplished by playing a sport. And so we are here encouraging leagues such as this. And congratulations to the entire team that's come together to have your first tennis Premier League. And God bless and congratulations to everyone who has made this possible. I'm going ahead and saying it all. And have a super one, have a great sporting week, have a great week of sportsman spirit. You're going to hone your skills, you're going to develop friendships, share laughs, discover your own abilities, and just enjoy the entire experience. So God bless, and thank you for having me here to share with you all at the start of this week. Thanks for inviting me. Thank you very much. And before your release, I would request Mr. Leander, please.